Okay, in the last class we are discussing about the production of the doshas and how these doshas are formed and from where actually it starts. So, in that context, we have seen this important slide that we have discussed in the last class. So, this is how the person is connected with the nature. Okay, so it will start from Sattva, Raja, and Tama. Then the same is interpreted as Vishnu, Brahma, and Shiva. Same has been called as Surya, Anala, and Soma in the next phase. Then, when you come to the earth level, atmosphere level, the same is called as Agni, Vayu, and Prithvi. And when you come to the body level, the same is called as Pitta, Vata, and Kapha. So when you come to the cell level, the same is called as mitochondria, nucleus, cytoplasm. Like this, even you can describe the same thing into the DNAs also. Now, this we know that Pancha Mahabhuta theory, there is one concept called as microcosm and another one is macrocosm. From the micro, the macro is formed, and how it is formed that we have seen in the last class. So these 5 qualities of Pancha Mahabhuta, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, and Gandha, the 5 qualities are there in this universe. Okay? So now how they are used for the biological activities when they come to the human body. Same 5 factors are there. We have got Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. If you want to talk in terms of the molecules, we have got nitrogen, we have got oxygen, we have got hydrogen, we have got carbon, and we have got water. Okay, so H2. So now these 5 qualities are there for the biological activities when they come to the human body. Whatever food we consume, it contains Panchamahabhutas. So these Panchamahabhutas contain these 5 qualities: Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. In other sense, they contain 5 basic molecules, starting from nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen, etc. So, but when they are enter inside the body, these molecules, how they are utilized for the purpose of building of the body. Okay. So, if you see any part of the body, so basically they are made up of all these 5 elements. That's all. Okay. So, you take any part of the body, the basic elements, these 5 only. इसका जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होके जो बहुत सारी चीज़ बन गया वो, बट बेसिकली दिस आर द 5 बेसिक मॉलिक्यूल्स. So this is present in the macrocosm, that is in the universe, and it is also present in the microcosm. Even in the cell also, if you see, these 5 elements are there. And if you see in the nature also, these 5 elements are there. So there will be some biological activities, and these activities are again categorized into 3 parts. So any living object is living because it is consuming the content from the universe. If you look into the Upanishad again, Annamaya Purusha, Purusha Annamaya. Okay, Purusha is existing only because of the Anna, and this Anna is available in the universe. Okay, so any living object is living because it is consuming the content from the universe, maybe in the form of oxygen, food, etc. So which is utilized, metabolized, and then produced into end products. Now, there is a regulating force for all these activities. These activities are taking place in the body, but it is well regularized. Okay, so mechanism by which the consumed food is taken, digested, and metabolized and utilized as energy is because of Pitta, which is predominantly the Teja Mahabhuta. All these biological activities are elements are there, but एक systematic pattern में है. ठीक है, तो क्या है इसमें वाता, पित्ता और कफ का क्या काम है? एनीथिंग विच इज अंडरगोइंग पाका इनसाइड द बॉडी, जो भी चीज़ है जो पाक हो रहा है, दैट मीन्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. ओके, सो डिफरेंट फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल फॉर मॉडिफिकेशन और मॉड्यूलेशन ऑफ दिस फैक्टर, सो दैट इज टोटली कॉल्ड एज पित्ता. पित्त एक ऐसी पार्ट है, अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो वो क्या था, पित्त सत्व था, और उसके बाद जब आएंगे तो विष्णु था, उसके बाद जब आए तो वो सूर्य था, उसके बाद अग्नि था. सो सेम फैक्टर इज ऑल्सो देयर इनसाइड द बॉडी. How it is producing energy outside, how it is producing the heat outside,
Similarly, that factor is helpful for production of the heat inside the body. और इट इज़ ऑल्सो ट्रू इनसाइड द सेल ऑल्सो. एक सेल के अंदर भी अगर वही फैक्टर है जो एक हीट को प्रोड्यूस करता है. अब हीट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए. ठीक है. अब जो भी चीज़ है मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में हेल्प में आता है और अल्टीमेटली हीट को प्रोड्यूस करता है, वो सभी फैक्टर्स को कुल मिला के हम इकट्ठा जो है आप यू कैन कॉल इट एज पित्ता. ओके. सिमिलरली ए पार्ट विच इज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड इज यूटिलाइज्ड फॉर द बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस. जो आप बाहर से ले रहे हो पंचमहाभूतिक आहार, उसमें से कुछ पार्ट वो हीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है जिसको हम पित्त बोलेंगे, और कुछ ऐसे पार्ट है जो बाहर से आप ले रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है आपका बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर दी एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ हेल्प फॉर दी building of your body, production of the immunity and so many other things. So that factor is called as kapha. That factor is called as kapha. There is a force which regulates the activities. ठीक है. एक तो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दूसरा जो है बॉडी बिल्डिंग भी चल रहा है. बट इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? एक फोर्स है जो ये सभी को जो है रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल नहीं है, रेगुलेट कर रहा है. ठीक है. सो देर इज ए फोर्स विच रेगुलेट ऑल दिस एक्टिविटीज विच इज वायु एंड टू सम एक्सटेंट आकाश ऑल्सो. ओके. सो दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज वाता. सो सेम बाहर से जो हमने फूड लिया वही अंदर जाके वाता पित्त कफ का काम करता है. सो दे डू द डिफरेंट वर्क्स और डिफरेंट फंक्शंस, hence it is called as vata. So broadly when you talk, one which is having a function of regulation of the body activities is called as vata. One which is having the function of production of the heat inside the body, so that is called as pitta. So one which is responsible for the body building process, that is called as kapha. Same is also applied into the cell also. So these three forces are acting in a body for its survival. सो ये जो तीनों फोर्स जो है बॉडी में एक्ट कर रहा है, आप चाहे ना चाहे ये तो अपना काम कर रहा है. ओके. बिकॉज ऑफ विच दिस बॉडी इज एग्जिस्टिंग, अदरवाइज दिस बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट. इफ ओनली देर इज प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड देर इज नो रेगुलेशन, बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट. इफ ओनली देर इज हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन, देर इज नो बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस, बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट. सो जो आपने लिया बाहर से वही बाहर के अंदर आने के बाद, सो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड दे आर डूइंग देयर function. So always there will be a balance between the two opposite acting forces, and in between the balance is maintained. So this is nothing against the physics. ये जो यहाँ पे these three forces are acting in the body for its survival, and this is nothing away from the physics. Only the की presentation is different. जिस तरीके से ये दोष का हमने explain किया है, otherwise ये pure physics है. Always there will be a balance between two opposite acting forces. If you see vata and kapha, so they are two oppositely acting forces. Okay. But inside the body when it comes, there is a balance. एक balance maintain हुआ है. ठीक है. So that balance is not 50-50. Okay. That balance you cannot calculate कि vata 50 है और kapha 50. ऐसा नहीं है. वो दोनों जो है अलग अलग proportion में है, अलग अलग काम करता है, but opposite काम करता है दोनों एक दूसरे का. ठीक है. और एक अनएक्सप्लेन्ड बैलेंस इसके बीच में मेंटेन हुआ है. ओके. एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. नाउ origin of the universe and as well as man. Now this word is called as prapancha. हम बोलते हैं कि इस वर्ड को जो है प्रपंच बोलते हैं. What is प्रपंचा? पंचा मीन्स पंचमहाभूतास. जो पंचमहाभूता से जो बना है वही प्रपंच है. Okay. Therefore the word prapancha is used. So which means everything. Okay. Everything. The universe is made up of 5 Panchamahabhutas. Whatever which is present in this universe, it is nothing but it is made up of 5 Panchamahabhutas. So now, qualities of these elements in each and every particle, these qualities are present in each and every particle of this universe. The gross form of these elements is called as Mahabhutas, and the subtle form of this element is called as Tanmatras. So we get two important terms, Mahabhutas and Tanmatras. यही जो एलिमेंट्स है जो उसका ग्रॉस फॉर्म में आ जाता है हम उसको महाभूत बोलते हैं. यही एलिमेंट्स है जब वो ग्रॉस फॉर्म में नहीं है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, सो देन वी विल कॉल इट एज तन्मात्रास. बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट. ये एलिमेंट्स का कोई डेप्थ नहीं है, इसका एंड नहीं है. ठीक है. एक घट या पॉट डिस्ट्रॉय हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉट को बनाने वाला जो मड डिस्ट्रॉय हो गया, वो पॉट का शेप डिस्ट्रॉय हो गया. दैट्स ऑल. दैट मड इज देयर, द पार्टिकल्स आर देयर. Okay, but it is present in the subtle form. It is not having a particular shape. That's all.
So these 5 elements are there. The Prithvi is presence of the mass. So when we talk about the mass, वो एक mass का जैसा act करता है. It gives a structure. For a given structure, it is a mass. Jala is acting as a fluidity for the given structure. Tejo Mahabhuta is heat or fire. Vayu is instability. Okay, and Akasha is the space which is occupied by that particular particle. So this is present everywhere. If I am talking about this mobile, so when I keep this mobile over here, so it occupies some amount of the space, and this is nothing but Akasha. Okay, so like that. So these qualities are present in each and every particle in a varied proportions with the predominant of any one Mahabhuta. That is called as केवल भौतिकत्व सिद्धांत. ठीक है. सो सभी में जो है सभी पंच महाभूत है, बट कोई एक महाभूत जो है वो ज़्यादा प्रोडोमिनेंट है. नाउ कम टू दी बेसिक जो हमारा टॉपिक है, दोषास, एनालिसिस ऑफ द दोषास. सो नाउ just like, I think this is a repetition, just like a Soma, Surya, Anila, they maintain the universe, dosha also maintain the body. Now how the doshas maintain the body, एक बिट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर अगर चाहिए तो आपको रेट्रोग्रेडली क्वेश्चन पूछना चाहिए. ये जो है यूनिवर्स कैसे मेंटेन हो रहा है, ठीक है, तो इस बॉडी कैसे मेंटेन हो रहा है. तो क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स कैसे मेंटेन हो रहा है. सोमा, सूर्य और अनला, ये तीन मिलके जो है इस यूनिवर्स को कैसे मेंटेन कर रहा है. ठीक है, तो सही टाइम पे बारिश आ रहा है, सही टाइम पे जो है धूप आ रहा है, सीजनल चेंजेस हो रहा है, और डेली जो है सुबह और रात हो रहा है. तो ये सब चेंजेस कैसे चल रहा है. ठीक है, सो देयर इज ए बैलेंस. ठीक है, तो इस यूनिवर्स में एक बैलेंस चल रहा है. सिमिलरली देयर इज ए बैलेंस इनसाइड द बॉडी ऑल्सो बिटवीन दिस थ्री, वाता, पित्ता एंड कफा. दिस इज हाउ दे मेंटेन द बॉडी. So each and every part of the body contains 3 doshas. Now, usually when we study doshas जो है आमाशय में है, पक्वाशय में है, पक्वाशय में वात है, आमाशय में ये है, हम इस तरीके से एक स्थान दिया हुआ है ना, place. Actually, this giving this place to a particular dosha, it is only for the identification purpose. That means that they are predominantly present there. So when I say वात का स्थान जो पक्वाश है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मेरा बॉडी पार्ट में वात है ही नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. प्रिडोमिनेंटली वाता इज देयर, और मे बी द प्रोडक्शन ऑफ द वाता इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन द पक्वाश प्रदेश. सो बेसिकली इन ऑल द एक्टिविटीज वी हैव गॉट ऑल द 3 दोषास, एंड दीज 3 दोषास आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. बिकॉज वी एक्सप्लेन इन सेल में भी जो है वात पित्त कफ है. एक सेल का आप एग्जाम्पल देंगे, सेल के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होता है, सेल के अंदर भी एनाबॉलिक प्रोसेस चलता है, सेल का अंदर भी जो है डिवीजन चलता है, रेगुलेशन चलता है. सो वात पित्त कफ एक सेल में भी है. इफ़ यू टेक ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वहाँ पे तो एक ही सेल है, वो जिंदा है ना. ठीक है, सो हाउ इट इज़, बिकॉज वात पित्त कफ इज देयर एंड दे आर डूइंग देयर फंक्शन. नाउ स्पेसिफिक पार्ट्स मेंशन्ड इज ओनली फॉर लुकिंग एट द फंक्शंस. संहिता में जो स्पेसिफिक पार्ट दिया है एक एक दोष के लिए, वो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह में दोष नहीं है. वो तो सिर्फ इसलिए बताया कि उसका फंक्शन को देखते हुए वो स्थान का बताया कि प्रिडोमिनेंटली पक्वाशय में आपका वात का फंक्शन मिलता है, प्रिडोमिनेंटली जो है कफ का फंक्शन आपको आमाशय में मिलता है, प्रिडोमिनेंटली गृहिणी में जो है आपको पित्त का फंक्शन मिलता है. सो ऑन दिस बेस्ड ऑन द फंक्शंस, ओके, प्रिडोमिनेंट फंक्शंस, दिस प्लेसमेंट हैज़ बीन गिवन. ठीक है, नेम ऑफ द प्लेस इज गिवन, अदरवाइज देयर इज नो समथिंग. Because doshas are present in the cell level, tissue level, organ level, system level, psychological level, organism level, atmospheric level, universe level and spiritual level. ये हमने explain किया है already. Okay, so there is a question, isn't it? लोकवायु और देहवायु, वातकलकली अध्याय चरका, देहवायु and लोकवायु. So तो लोकवायु का so many functions are explained. नियंता, प्रणेता च मनसा. ठीक है, इंद्रियाणाम उद्योतकः. तो सब कुछ जो है उसी से चलता है. एंड सेम इज दैट इज लोकवायु दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ओके, एंड द सेम लोकवायु इज नरिशिंग द बॉडीली वायु. दैट्स ऑल. दिस पॉइंट हैज टू बी मेड वेरी क्लियर. ठीक है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द नेचर. नेचर से जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वही हमारा बॉडी में चल रहा है. नेचर में जिस दिन एनर्जी फ्लो बंद हो जाएगा, सो देन, अच्छा आपका है क्या, नेचर में जो है when the energy flow stops, then there will be a stoppage of the body energy also, because we are the continued part of the body.
Now, there are some fundamental functions of Vata. Okay, for example, like initiation, motivation, control, division, sensation, movements, etc. Similarly, for the Pitta, there are some fundamental functions like production of the heat, all the energies, all transformations, metabolism, digestion, and food intake. Okay, and for Kapha also there are some fundamental functions like resistance, protection, immunity, growth, and structural integrity also. Okay, so it is difficult to attribute doshas to one particular structural or functional entity. They work together with only one aim of maintaining the equilibrium of the body. So these common functions should be attributed to the cell, tissue, organ, system, and whole body.